Hello kids, how are you all? Hope you are doing good. Welcome to our grammar lessons. Kids, in today's video, we shall learn about. Adjectives for comparison. So, let's begin. So, kids, let's begin with adjectives for comparison. Now, before starting with adjectives for comparison, what do you mean by adjectives? So, adjectives are the words that describe the noun, a word that tells more about the noun. Hence, they are also called as describing words. तो ये डिस्क्राइब करते कोई कलर, साइज, साउंड, शेप, नंबर, टेस्ट, weather, texture, etc. Now, look at the example. For example, she is a smart girl. Here, girl is a noun and smart describes the girl. Smart is a describing word, it's an adjective. Second example, this is a big house. Here, house is a noun. And how is the house? House is big. Here, big is the describing word. It is an adjective. Now, kids, adjectives are not only used for describing the noun, but they are also used for comparison. So, adjectives जो है वो सिर्फ हम noun को describe करने के लिए यूज़ नहीं करते, but adjectives comparison के लिए भी यूज़ होते हैं. So, let's see. There are 3 degrees of comparison: positive, comparative, and superlative. Let's begin with positive degree. In positive degree, we do not compare. For example, Raj is strong. Here, strong is an adjective and it's not comparing Raj with anyone. So, it is a positive degree. Strong adjective है और हम उसे किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो पॉजिटिव है. Now let's move forward to comparative degree. In comparative degree, we modify the adjective by adding er at the end while comparing two things. For example, Rahul is stronger than Raj. Here we are comparing Raj with Rahul. Raj is strong, but Rahul is stronger than Raj. यहाँ पे हम लोग ने कंपैरिजन किया है. राज को हम लोग ने राहुल के साथ कंपेयर किया है. राज स्ट्रॉन्ग है लेकिन राहुल राज से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हम वहाँ पे लिखेंगे स्ट्रॉन्गर. और जब भी हम 2 चीज़ का कंपैरिजन करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, तो हम कंपैरेटिव डिग्री में एंड करते हैं एडजेक्टिव को er से. सो यहाँ पे आएगा स्ट्रॉन्गर. ओके, now let's move forward to superlative degree. The superlative degree compares more than 2 things to show the greatest degree of quality. So superlative degree हम कंपेयर करते हैं 2 से भी ज़्यादा चीज़ों के लिए, ओके, ताकि वो ग्रेटेस्ट है ये बता सके. तो इट्स अ ग्रेटेस्ट डिग्री. सो फॉर एग्जाम्पल, रमेश इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ all. Here we are comparing Raj, Rahul and Ramesh. 2 से ज़्यादा लोगों को हम कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए ये सुपरलेटिव डिग्री है. ओके, सो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तब हम एडजेक्टिव को मॉडिफाई करके एंड में est लगाते हैं. ओके, सो राज इज़ स्ट्रॉन्ग बट Rahul is stronger than Raj. However, Ramesh is strongest of all. Let's take one more example. Meena is short. Tina is shorter than Meena. Sia is the shortest of all. यहाँ पे हाइट का कंपैरिजन हो रहा है कि मीना है वो शॉर्ट है हाइट में, पर टीना जो है वो मीना से भी ज़्यादा शॉर्ट है हाइट में, और सिया उन दोनों से भी शॉर्टेस्ट है. तीनों में सबसे शॉर्टेस्ट कौन है? तो सिया.
So this is the degrees of comparison. आपने नोटिस किया कि हमने comparative form में er लगाया end में adjective के पीछे. Yes. शॉर्ट का हम लोग ने कर दिया शॉर्टर एंड सुपरलेटिव फॉर्म में हम लोग ने लगाया EST जिसका हम लोग ने कर दिया शॉर्ट टेस्ट. ओके. Here, short is the positive degree as it is not compared to anyone. Shorter is the comparative degree as we are comparing two things or people. Here we are comparing the height of Tina and Meena. Lastly, short test is the superlative degree as we compare two or more things or people. Here, Sia is shortest. She is compared with Meena and Tina. Now let's complete this exercise so that we can understand more about adjectives for comparison. Positive degree is tall. So to make it into comparative form, we will use taller, TALLER, and in the superlative form we will use tallest, TALLEST. Then fast. Fast का क्या होएगा comparison में faster and yes fastest. Slow, slower, slowest. Hard, harder, hardest. Now let's move to the next activity. Read the following sentences about Laura and then answer the questions about her family. So Laura is telling something about her family. Let us read out this para and then we have to answer the questions below. Hello, my name is Laura. I'm 11 years old. This is my family. My mummy is taller than my dad. My uncle Pablo is 35 years old and my aunt Betty is 30 years old. They are both shorter than mummy. I also have a little cousin Bang Bang and he is older than my little sister. So Laura अपनी फैमिली के बारे में बताती है. First she says that मैं 11 years की हूँ और मेरी जो फैमिली है उसमें मेरी मम्मी टॉलर है मेरे डैड से. मेरे अंकल पैबलो 35 इयर्स ओल्ड है और मेरी आंट बेटी जो है वो 30 इयर्स ओल्ड है और दोनों अंकल और आंटी मेरी मम्मी से शॉर्टर है. आई ऑल्सो हैव अ लिटिल कज़िन बैंग बैंग. मेरा एक कज़िन है जिसका नाम बैंग बैंग है और मेरी एक लिटिल सिस्टर है. मेरा जो कज़िन बैंग बैंग है वो मेरी लिटिल सिस्टर से बड़ा है. Let's look at the questions. First one, who is the tallest? तो पूरी फैमिली में सबसे टॉलेस्ट कौन है? तो यहाँ पे देखो लॉरा के डैड से लॉरा की मम्मी टॉलर है और अंकल और आंट से भी मम्मी टॉलर है. तो सबसे टॉलेस्ट कौन हुआ? मम्मी. सो हमारा आंसर आएगा मम्मी इज़ द टॉलेस्ट. हु इज़ द यंगेस्ट? यंगेस्ट यानी घर में सबसे छोटा कौन है? यंगेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री है बिकॉज पीछे EST रखा है बराबर. सो यहाँ पे देखो बैंग बैंग कज़िन है लॉरा का और वो ओल्डर है लिटिल सिस्टर से. तो सबसे यंगेस्ट कौन हुआ पूरे घर में? लिटिल सिस्टर. सो द लिटिल सिस्टर इज़ द यंगेस्ट. इज़ लॉराज डैड टॉलर देन हर मम्मी? क्या लॉरा के डैड उसके मम्मी से टॉलर है? यहाँ पे कंपेयर किया है डैड और मम्मी को. हम लोग ने यहाँ पे टॉलर यानी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है. सो पैराग्राफ में ये सेंटेंस क्या था? माई मम्मी इज़ टॉलर देन माई डैड. सो यहाँ पे मम्मी टॉलर है डैड से. सो डैड टॉलर नहीं है. सो क्या आएगा हमारा आंसर? नो, लॉराज डैड इज़ नॉट टॉलर देन हर मम्मी. हु इज़ ओल्डर, बेटी और पैबलो? सो इन द क्वेश्चन इट्स गिवन ओल्डर यानी कंपैरेटिव डिग्री. ओके, सो यहाँ पे देखो माई अंकल पैबलो इज़ 35 ईयर्स ओल्ड एंड माई आंट बेटी इज़ 30 ईयर्स ओल्ड. तो ओल्ड कौन हुआ? एज में ओल्ड हुए पैबलो अंकल. ओके, तो माई अंकल इज़ ओल्डर देन माई आंट. ओके. Now kids, there are some rules to follow. Rule 1. If the adjective ends with E in the positive degree, Then we only use R for the comparative form and ST for the superlative form. For example, large. Here
large is ending with letter E. So for the comparative form, we will use L-A-R-G-E-R, larger. And for the superlative form, we will use L-A-R-G-E-S-T, largest. Okay, what if the positive ends with the letter Y? So if it ends with the letter Y, we drop the letter Y and add in the comparative form IER and in the superlative form IEST. For example, happy. Now here last letter is Y. So for the comparative form we will use happier, and for the superlative form we will use happiest. Also you must take care कि अगर जो लास्ट का लेटर Y में है तो उसके आगे कॉन्सोनेंट हो. सो अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस Y है तो हम Y को ड्रॉप करके IER और IEST यूज़ कर सकते हैं. ओके ओके नेक्स्ट रूल इज़ if the positive word ends with vowel plus consonant, then we double the last letter, double the consonant letter and add ER in the comparative form and EST in the superlative form. For example, big. Here you may see there is a vowel I and the letter is ending with the consonant G. So for the comparative form we will use BIGGER. हम लोग ने लास्ट लेटर को क्या कर दिया, डबल कर दिया एंड एंड में हम लोग ने लगा दिया ER कंपैरिजन फॉर्म के लिए. वेयर इज इन सुपरलेटिव फॉर्म we will use BIGGEST. यहाँ पे भी हम लोग ने लास्ट के लेटर को, लास्ट का कॉन्सोनेंट G को डबल कर दिया एंड ऐड किया EST. बिग, बिगर, बिगेस्ट. One more example, hot, hotter, hottest. Next rule is that if the positive is long, long means वहाँ पे 2 से ज़्यादा syllables यूज़ किए गए हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो हम comparative form में we will add more and in superlative we will add most. So for example, beautiful. अब यहाँ पे ब्यूटीफुल ये 2 syllables है, राइट. सो हम कंपैरेटिव में यूज़ करेंगे मोर ब्यूटीफुल, वेयर इज इन सुपरलेटिव वी विल यूज़ मोस्ट ब्यूटीफुल. नाउ देर आर सम एडजेक्टिव्स दैट डू नॉट फॉर्म comparative and superlative forms from their positive degree and they are known as irregular degrees of comparison. वो लोग पॉजिटिव में जो वर्ड दिया हुआ है उससे फॉर्म नहीं करते, उनकी पूरी कंप्लीट स्पेलिंग्स ही चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, गुड. फॉर कंपैरेटिव फॉर्म वी विल यूज़ बेटर एंड फॉर सुपरलेटिव फॉर्म वी विल यूज़ बेस्ट. सो किड्स, नाउ लेट्स डू अ स्मॉल एक्सरसाइज. फर्स्ट वन इज स्वीट. Yes, last is the consonant, so we will add sweeter and in the superlative form we will add sweetest. Then there is fat. As I told you that if vowel and the consonant are there, we will double the last letter. So here there will be fatter and fattest. Lucky, lucky. Now here the word is ending with Y. But before there is a consonant. So consonant plus Y, we will drop the Y. हम Y को निकाल देंगे और comparative form में डाल देंगे luckier, LUCKIER and superlative form में हो जाएगा luckiest, LUCKIEST. हमने Y को इसमें निकाल दिया है. Next is wide. Now यहाँ पे ending में already E है, so हम comparative form में सिर्फ R लगाएंगे और सुपरलेटिव फॉर्म में सिर्फ ST लगाएंगे. वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट. नेक्स्ट इज लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट. नेक्स्ट स्मॉल. तो यहाँ पे हम कंपैरेटिव में ER लगाएंगे और सुपरलेटिव में EST. स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. मेरी. पीछे Y है तो हम Y को ड्रॉप करेंगे और IER और सुपरलेटिव में IEST लगाएंगे. सो मेरियर
and merriest. Last one, useful. सो यहाँ पे 2 सिलेबल है, यूज़ एंड फुल, तो लॉन्ग एडजेक्टिव हुआ. सो हम कंपैरेटिव फॉर्म में मोर यूज़फुल एंड सुपरलेटिव फॉर्म में मोस्ट यूज़फुल लगाएंगे. यूज़फुल, मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल. So kids, here we end our learning. I hope you have understood the meaning of adjectives, how to change the form from positive, comparative and superlative. Bye. Take care. Have a wonderful day.